Hello and welcome everybody. So today's video is about logical operators which are and, or, and between. And I'm your instructor Divya Thakur. And or operators. And का मतलब क्या होता है? And means ये भी और ये भी. और का मतलब क्या होता है? या ये या वो. Similarly, जब हम where clause use कर सकते हैं एक SQL query में, where का मतलब होता है जब एक condition होती है, तो उसमें हम operators use कर सकते हैं and और between. And और operators क्या करते हैं? They filter the records जब एक से ज़्यादा conditions हों. So suppose and operator क्या करता है? It displays the result जब सारी conditions true हों. और ऑपरेटर तभी रिकॉर्ड या रिजल्ट डिस्प्ले करता है जब उन दो कंडीशंस में से या उन तीन कंडीशंस में से या उन चार कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू हो. सिंटैक्स देखते हैं. सो सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन आ गई एंड दूसरी कंडीशन आ गई एंड थर्ड कंडीशन एंड सो ऑन. एंड जब तक ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी वो रिजल्ट जनरेट होगा क्वेरी से. और में क्या होता है? सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम द टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 एंड सो ऑन. दो होनी ज़रूरी है. टू कंडीशंस में ही ये दोनों ऑपरेटर्स यूज होते हैं एंड और. तो ये तब रिजल्ट हमारा देगा जब इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो या सारी ट्रू हो तो भी रिजल्ट देगा. इन दोनों में से इन तीनों में से कोई दो ट्रू हो तब भी हमें रिजल्ट मिलेगा. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. नाउ इन अ विजुअल कोड let's see how and or operators work. For that, go to this open folder from file and choose the folder in which you have kept your Chinook database. So now this will open up. So just press Ctrl Shift P, click on this open database and choose Chinook. And you'll get this tab over here, which is SQLite Explorer. So now you can view all the tables in this. And if you click on one table, you can view the columns. Now let's see an example of AND query. So suppose in this customers table, I want to know the customers that belong to USA, whose state is California and whose city is Mountain View. So first just run this over the country. So let me run this query. I'll choose the Chinook DB. And as you can see, these are the first names of the customers that reside in the country USA, but these are their states such as California, Washington, New York, California again, Florida over here, Massachusetts, and these are the cities where our customers are living. So if in particular I want to know that who are my customers who are residing in the state California in USA, I can quickly do and state equals to California, and when I'll run this query, I'll know my customers who belong to USA and the state California. Now in state California, there are two cities where my customers belong to, which is Mountain View and Cupertino. So if I want to know if there was a discrepancy with the customer living in the city Mountain View, and I want to see who all my customers are residing there, so I can simply put and city equals to Mountain View. And this is how I'll get the information about my customers that reside in California, and the city is Mountain View. So now let's see an example of OR. So let me close this. So if I want to know who all my customers are that reside in either United Kingdom or Ireland
or India. So for that, I can write a where clause and state that the country should be either Ireland or country should be India or the country should be United Kingdom. And then if I'll run this query on my Chinook DB, so it will give me this result. The first name, last name, all of the information, and their countries are Ireland, United Kingdom, and India. Now let's see an example like how to combine and or. And I'll take you through these queries. So first, let me select all from our table, which is customers, where the country is Germany. Okay, I'll run this selected query from over here over my chinook.db, and as you can see that these customers either belong to the city Stuttgart, Berlin, or Frankfurt. Okay, and if I'll run this query on and the country is India, so I'm gonna select this and run this selected query. Okay, I'll run this with or. And I'll get the cities as Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Delhi, Bangalore. So this is what I wanted. Now I can introduce this as I want my customers to either belong to the city Berlin or to the city Delhi, okay? So I can put here Frankfurt instead because I want the country to be Germany, and this condition should also be true. So in Germany exist these three cities, which is Stuttgart, Berlin, and Frankfurt. So I want my customers to be either from Berlin or Frankfurt. So either from Berlin or, so I'll quickly do run selected query, and I can see that now I have customers that belong to the city Berlin or Frankfurt, and the country is Germany. Now what I can do is I can know my customers. So I'll just select the city, the state, the country, and I'll quickly do a first name with the last name and give it a name as just name from my table, which is customers, where the country should be Germany or
The city should be either Delhi or city should be Bangalore. So this is how I have cascaded my conditions. So now I'll run this query, run this selected query, and I'll get the city as Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Delhi, Bangalore, and the countries as Germany and India. So this is how you can cascade and or conditions. Next, and not can be used together. So let's see how this works. In the previous video, we saw that not, if you don't want your customers that belong to USA and Canada not to show up in your query, then you can either do where place this not and in parenthesis place country equals to USA and country equals to Canada. Put a statement terminator and we'll select this query and run this selected query. So you can see that in our country column, the USA and Canada have not been yet excluded. तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इस कंडीशन को फॉल्स करना है तो इसके सामने आपको नॉट लगाना है एंड इस कंडीशन को भी आपको फॉल्स करना है तो एंड के बाद आपको नॉट लगाना है, तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें इन क्वेरी से मिल रहा था. सो यू कैन सी यूएसए और कनाडा से अब एक भी कस्टमर इस टेबल में शो नहीं हो रहा है. हमने कल क्या किया था, वी हैड यूज्ड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, और हमने लिया था नॉट इन और ब्रैकेट में लिखी थी ये दोनों वैल्यूज विच इज यूएसए एंड कनाडा, और यहाँ लिखा था वेयर कंट्री नॉट इन एंड सेम रिजल्ट मिल रहा है. सो कंट्री यूएसए एंड कनाडा ओमिटेड हो गए हैं एंड बाकी सारी कंट्रीज के कस्टमर्स यहाँ शो हो रहे हैं. बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज. मतलब 10, बिटवीन 10 एंड 50, अगर इनमें से आपको कोई वैल्यू चाहिए इन दैट कंडीशन तो बिटवीन यूज होता है. So the values can be numbers, they can be text or even dates. So between operator is inclusive, यानी अगर 10 to 50 आपको values देखनी है तो 10 भी inclusive होगा, 50 भी inclusive होगा. इसका syntax है select column name or column names from the table name where column name, where that particular column name between value 1 and value 2. Let's see a practical example. Now let's see how the between query works. So for that I am taking first into account this invoices table over here. So I'll run a query on this and पहले देख लेते हैं कि इस टेबल में क्या क्या है. So इस टेबल में है invoice ID, customer ID, invoice date, billing address, billing city, billing state, billing country, billing postal code and this total. अब मुझे बिलिंग के टोटल पे ध्यान देना है. सो आई विल क्विकली डू व्हाट, मैं यहाँ से निकालती हूँ मैक्सिमम कितना है यहाँ पे टोटल की वैल्यू और मिनिमम कितनी है टोटल की वैल्यू. सो आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड सिलेक्ट मैक्स फंक्शन ऑन टोटल and also the min function on total and run this query
सो मैक्सिमम है 25.86, मिनिमम है 0.99। तो मुझे ऐसी कंट्रीज़ की कस्टमर्स जानने हैं जो बिलिंग करते हैं बिटवीन 10 एंड 20, जिनकी बिलिंग 10-20 के बीच में है, टोटल जिनका बिलिंग अमाउंट 10 to 20 के बीच में है। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट ओवर हियर, यहाँ से आई एम जस्ट गोना सिलेक्ट कस्टमर ID, also their billing country, and finally total। सो जो मेरा टोटल है वो होना चाहिए बिटवीन वेयर टोटल बिटवीन 10 एंड 20। इस क्वेरी को रन करते हैं। सो यू कैन सी दैट मुझे वो कस्टमर आईडीज़ मिल गई, बिलिंग कंट्रीज़ भी मिल गई, और ये जिनका टोटल है 13.86 एंड सो ऑन। सो एक ऑर्डर बाय क्विकली कर लेते हैं इसको। सो आई विल डू एन ऑर्डर बाय टोटल। ओके, रन करते हैं इस क्वेरी को। सो स्टार्ट हो रहा है 10.91 से एंड जा रहा है 18.86 तक। सो नेक्स्ट अब देखते हैं कि बिटवीन नॉन न्यूमेरिक फील्ड्स पे कैसे यूज़ हो सकता है। सो उसके लिए हम टेबल लेंगे ट्रैक्स की। सो उस पर हम कर देते हैं न्यू क्वेरी। देख लेते हैं इस टेबल में क्या क्या है। सो इसमें है ट्रैक ID, नेम, एल्बम ID, मीडिया टाइप, जॉनर ID, कंपोजर, मिली सेकेंड्स, बाइट्स, यूनिट प्राइस। सो मेरा ध्यान गया इस कंपोजर पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ कंपोजर और इसे करती हूँ ऑर्डर बाय। रन किया इस क्वेरी को। सो इसमें नल भी आ रहा है। सो आई विल पुट अ वेयर क्लॉज यहाँ पे, वेयर कंपोजर इज नॉट नल। रन करते हैं इस क्वेरी को। सो ये सारे कंपोजर्स के नेम आ गए स्टार्टिंग फ्रॉम A। ओके, एंड चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो अब चलते हैं 23rd पेज पे। सो मुझे यहाँ कंपोजर दिख रहा है ग्रीन डे, एंड हैरिस भी है यहाँ पे नीचे। सो मेरा इंटरेस्ट है ये जानना कि वो सारे कौन से कंपोजर्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ACDC से एंड गोइंग टिल हैरिस। सो इस वेयर क्लॉज में आई विल पुट एंड, और मुझे कंपोजर्स जानने हैं बिटवीन ACDC टिल हैरिस। सो आई विल पुट कंपोजर बिटवीन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी AC/DC एंड हैरिस। ओके, एंड क्विकली रन करते हैं इस क्वेरी को। सो आपको वो सारे कंपोजर्स मिल जाएंगे जो इनके बीच में हैं। सो यहाँ तक आपको मिल गए आपके कंपोजर्स। सो दिस इज हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन यूजिंग बिटवीन on numeric and non-numeric fields. So this is all, and thank you for watching.